Assalamu alaikum students. I hope that the previous videos are clear to you all and the previous topics are also clear. I hope there is no doubt in your mind. The topic today is structure and function of brain, and here as you can see that it is a neural tube. What is neural tube? Actually, during the formation of nervous system in the embryological development, first there is a neural tube. This neural tube is formed during the embryological development inside the mother body. First of all, this neural tube, at the top of this neural tube, this is the cranial end and this is the caudal end. From the cranial end, the three vesicles are formed. The upper vesicle is called the forebrain, which is also called the prosencephalon. The lower is called the midbrain. The down one is called the hindbrain, which is the rhombencephalon. So the cranial end of the neural tube is converted into the outgrowths, the three outgrowths. The first is forebrain, the middle one is midbrain, and the last one is hindbrain, which is also called prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. These are the three primary vesicles. It is important because sometimes it is framed as a question that forebrain is also called prosencephalon. ठीक है? So the uppermost part, which is the forebrain, it is divided into two more regions. यानी ये divide हो जाता है further two divisions में. जैसे कि आप देख रहे हैं, this is the outer one and this is the later one, यानी first and the second. ये first और second ये कौन से पार्ट हैं? ये prosencephalon के पार्ट हैं. ये ग्रीन और ब्लैक रीजन ये डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में. ये जो मैंने ग्रीन में ड्रॉ किया है, ये मैंने इसको सोलन पार्ट बताया है. ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स बन जाते हैं. सो फोर ब्रेन में आपके पास टू पार्ट्स हो जाते हैं, टीलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन. टीलेनसेफेलॉन में आपके पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं, और आपके पास आ जाता है डायनसेफेलॉन में थैलेमाई या थैलेमस, टू थैलेमस. ठीक है? सो इफ समबडी आस्क फ्रॉम यू, और इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट द थैलेमस इज द पार्ट ऑफ टीलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन, इट इज द पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन. ठीक है? सो समटाइम्स दे आस्क दैट in case of NMDCAT, National MDCAT, or in case of ETA, they ask that the cerebral hemisphere is the part of telencephalon or diencephalon. It is the part of telencephalon. ठीक है? Now, as you can see in this diagram, we have telencephalon, which is the cerebral hemisphere, diencephalon, which consists of thalami, and we have the midbrain, which is also called the mesencephalon. Midbrain divide नहीं होता. There is no further division of midbrain, and the rhombencephalon is divided into two parts, pons and medulla, and then we have the spinal cord. In this diagram, I have represented the two thalami, and I have represented the third ventricle, and I have shown the pineal body over here. ठीक है? So if there is a question that there are how many thalamus, there are two thalami. Thalamus is the part of diencephalon. Cerebral hemispheres is the part of telencephalon. Rhombencephalon is divided into pons and medulla. In this diagram, I have shown the optic nerves. The optic nerves which are connected with the brain, with the forebrain. So if somebody asks, and if there is a question that ऑप्टिक नर्व आपके पास कहाँ से कनेक्टेड है, ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक ट्रैक से कनेक्टेड है, और ऑप्टिक ट्रैक्स जो हैं ये आपके पास फोर ब्रेन से कनेक्टेड हैं. ठीक है? सो इन दिस डायग्राम आई हैव शोन द ऑप्टिक ट्रैक, ऑप्टिक नर्व, एंड आई हैव शोन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है? ताकि आपको लोकेशन पता चले कि आपके पास ऑप्टिक ट्रैक की लोकेशन क्या है, विजुअल ट्रैक की लोकेशन क्या है. सो बेसिक टॉपिक
today is function of the brain. Parts आपने पढ़ लिए. We have divided the brain into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. The forebrain is the most sophisticated area, integrating region of the हम कह सकते हैं brain. It is divided into two parts: telencephalon and diencephalon. The telencephalon consists of pair of olfactory bulbs that are related with the sense of smell, and the telencephalon also consists of cerebrum, which is the largest part of the brain. Which is the largest part of the brain? Cerebellum or cerebrum? It is cerebrum, right? The cerebrum is divided into two cerebral hemispheres. There is a nerve fiber which is called the corpus callosum, nerve fiber. These are nerve fibers. They act as a bridge and they carry the memory from one side and gives the memory to the other side. I have shared the video related to the corpus callosum. Here there is a animated video and you have to watch that video related to the corpus callosum. Is the actually the C-shaped nerve fiber which is connecting the right cerebral hemisphere with the left one and transmitting the sensory impulses. Okay. Then we have the function of cerebrum. Cerebrum is the control center of the brain and it is connected with the sensory systems. It will control the sight, smell, speech, taste and hearing. And cerebral hemispheres are also concerned with the conscious sensation. Means कि if आपको लगे कि आप जिस जगह बैठे हैं, जब आपके पास आपकी सेंस ऑफ पोजीशन, सेंस ऑफ लोकेशन जब आपको मालूम होती है, इसका मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स तक गई है. कॉन्शियस मतलब कि जब आप एक चीज़ के लिए अवेयर हो जाएं और वो इंफॉर्मेशन जो है वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स तक पहुंच जाए. जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप बैठे हैं, आपको अपनी सेंस ऑफ लोकेशन अभी नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही मैं आपसे कहूँ सिट प्रॉपरली, तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे और आप अपनी पोजीशन को करेक्ट करेंगे. तो आपका मैसेज जो है वो हायर ब्रेन सेंटर्स तक गया है, जिस वजह से हमने कहा कि दिस इज कॉन्शियस सेंसेशंस. देन वी हैव द वॉलेंट्री मूवमेंट्स. एंड वॉलेंट्री मूवमेंट्स की डिटेल आपको पता है कि आपके ये जो कंट्रोल, आपकी वॉलेंट्री कंट्रोल है जो आपकी विश के अंदर है, जो आपकी कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर है, तो ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हैं ये कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम और सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. Learning is also concerned with the cerebrum, memory, decision making, thinking, reasoning and judgment. These are the functions of the cerebrum. You have to memorize them, and there are so many questions related to the nervous coordination जो कि आपके MCQs में and MDCAT में आते हैं. ठीक है. Then we have the diencephalon, and diencephalon कहाँ होता है? डायनसेफेलॉन आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट है? डायनसेफेलॉन आपके पास आ जाता है द बरेड पोर्शन, द मिडल पोर्शन, द बरेड पोर्शन विच इज़ द पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. लेकिन हम कह सकते हैं कि इट इज़ द डीप बरेड पार्ट. इट इज़ द part of diencephalon thalami, and here we can say that this diencephalon is concerned with the limbic system, and it consists of thalamus, hypothalamus, amygdala and hippocampus. All right, now what is the function of thalamus? Thalamus actually ये connect कर रहा है cerebral hemisphere. ये connection है as a relay station. आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर और थैलेमाई एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इट इज़ एक्टिंग लाइक अ रिले स्टेशन बिटवीन द बॉडी एंड द सेरेब्रम. तो बॉडी से जो इम्पल्सेस रिसीव होती हैं
जो कि डिफरेंट सेंसरी एरिया से आती हैं, बॉडी की तरफ से जो आती हैं, वो ये कैरी करेगा और ट्रांसमिट करेगा सेरेब्रम को, ठीक है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थैलेमस? इट इज acting like a bridge and it is connecting the body with the cerebrum. Okay, now the next function is of hypothalamus. hypothalamus बहुत डिटेल से हमने पढ़ा, हमने हार्मोन कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन में it is controlling the temperature, it is controlling the hunger, it is controlling the sexual response, fight and flight response एंड बायोरिदम्स, ठीक है। बायोरिदम्स आपके पास कार्डियक रीजन से रिलेटेड हैं। सो द हाइपोथैलेमस इज रिलेटेड विद द हार्मोनल प्रोडक्शंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ टेम्परेचर रेगुलेटर, it is important in the fight and flight responses. Now the next is amygdala. Amygdala is actually concerned with the sensation of punishment, pleasure, सेक्शुअल अरसोल। ये सारी की सारी वो पार्ट्स हैं जो आपके पास वो रिस्पॉन्सेज हैं जो तब प्रोड्यूस होंगे जब आपकी बॉडी जो है एक्साइटेड है, और ये एमिगडाला जो है ये आपको एक्साइटमेंट में, पनिशमेंट में रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्स देता है, और ये सेंसेशंस को प्रोड्यूस करवाता है। हिपोकैम्पस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, ठीक है। हिपोकैम्पस इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द लॉन्ग टर्म memory. So if there is a question that the long term memory is concerned with, so the answer is hippocampus. Hippocampus.